पिला माने बर्तमान आम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किसी एग्जांपल नहीं देखा बर्तमान हूँ कौन ना जिते कौन हम ना कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन यू प्रोवाइड हीट है ना नहीं यू प्रोवाइड हीट जो हीट प्रोवाइड करा कौन हम ना फॉर्मेशन हम कौन ना कॉपर प्लस आ कौन हम ना वाटर मिल है ना नहीं तार कौन ना व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड यू विल प्रोवाइड हीट यू विल गेट कॉपर एंड वाटर तार कौन है ना ये जो रिएक्शन कौन है ना कॉपर ऑक्साइड कौन है ना चेंज है कौटी ना कॉपर को चेंज है कॉपर ऑक्साइड चेंज टू कॉपर दैट मीन्स इन दिस रिएक्शन कौन है ना कॉपर ऑक्साइड रिमूव ऑक्सीजन है ना नहीं कौन है ये देख कॉपर ऑक्साइड कौन कला ना ये रिमूव कला है ना नहीं कॉपर ऑक्साइड रिमूव कला रिमूव रिमूव ऑक्सीजन है ना नहीं कॉपर ऑक्साइड रिमूव ऑक्सीजन है ना नहीं कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन रिमूव कला पर कौन है ना आमको कौन मिलला ना कॉपर मिलला है ना नहीं से भाव कौन है ना हाइड्रोजन कौन है ना आमर कौन है वाटर रे कन्वर्ट हो ना नहीं ये कौन हो ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो कौन हो ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना नहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है कौन ना आमको कौन ना वाटर मिलूँ H2 रे कौन हो ना जो ऑक्सीजन ऐड हो कौन हो ना आमको वाटर मिलूँ है ना नहीं तार कौन है ना इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग टू कॉपर है ना नहीं दैट मीन्स ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड है ना नहीं तो सो बाय डेफिनेशन कौन है ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस कौन कहूँ ना रिडक्शन सो वी कैन से कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर है ना नहीं कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर ऐसा नो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर सिमिलरली कौन है ना हाइड्रोजन इज चेंजिंग टू वाटर है ना नहीं दैट मीन्स ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन है ना नहीं जहाँ फल कौन है ना addition of oxygen to a substance is called amra कौन ना oxidation so we can say that hydrogen is being oxidized this hydrogen is oxidized to water okay so in this reaction removal of oxygen you see removal of oxygen from copper oxide and you will get copper and addition of oxygen from addition of oxygen in hydrogen yes or no so it is called your what it is called your reduction this one is your reduction है ना नहीं this one is your reduction that means removal of oxygen is called your reduction and addition in this case addition of oxygen is called your oxidation so copper oxide क्या कौन ना इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कह ना कॉपर ऑक्साइड की कौन कह ना गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आमर कौन हो ना कह कॉपर ऑक्साइड की कह कौन ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना नहीं कॉपर ऑक्साइड की कौन कह ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना नहीं से भाव में कौन ना कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउ आमर देखो हाइड्रोजन को कौन कह है ना नहीं हाइड्रोजन आमर कौन हो ना हाइड्रोजन केस कौन हो ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो है ना नहीं हाइड्रोजन केस कौन हो ना आमर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो है ना नहीं से कौन हो ना ये जो रिएक्शन रे बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन हो ना साइमल्टेनियसली चलुँ तेणु आपको कौन कह जाए ना रिडक्स रिएक्शन कह जाए कौन कह जाए ना रिडक्स रिएक्शन कौन कह जाए ना रिडक्स रिएक्शन जेहेतु कौन ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन ना एका समय रे होउछि है ना नहीं से आम कौन कहते ना
यह हूँ गोटे रिडक्स रिएक्शन। एटी हूँ कौन ना हाइड्रोजेन हूँ रिड्यूसिंग एजेंट आउ कपर ऑक्साइड हूँ कौन ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो रिएक्शन कौन होची ना कोटा किए होची ऑक्सीडाइज होची ना हाइड्रोजन होची ऑक्सीडाइज होची, किए होची रिड्यूस होची ना कपर ऑक्साइड होची रिड्यूस होची, है ना नहीं। तापरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किए ना कपर ऑक्साइड होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किए ना हाइड्रोजन होची कोडाला हाइड्रोजन होची रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन होची रिड्यूसिंग एजेंट, है ना नहीं। कपर ऑक्साइड होची कौन ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तापर किए होची रिड्यूस होची ना कपर ऑक्साइड होची रिड्यूस होची, किए होची ऑक्सीडाइज होची ना हाइड्रोजन होची ऑक्सीडाइज होची, है ना नहीं। दैट मीन्स ऑक्सीडाइज होची हाइड्रोजन, कपर ऑक्साइड कौन होची ना रिड्यूस होची, कपर ऑक्साइड को कौन कहा जाउची ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन को कौन कहा जाउची ना रिड्यूसिंग एजेंट, है ना नहीं। भल भाव बुझी पार। आर यू क्लियर? दैट मीन्स इन दिस रिएक्शन व्हेन कपर ऑक्साइड react with hydrogen and you will provide heat, you will get copper and water. In this reaction copper oxide is reduced to copper, hydrogen is oxidized to copper oxide is reduced to copper, hydrogen is reduced to water, है ना नहीं, hydrogen is reduced to water और the substance reduced in this reaction is copper oxide is reduced, hydrogen is oxidized. Are you clear? This is the example of oxidation and reduction reaction. Okay, I think you understand it clearly. भल भाव बुझी पार्छ बोली मु भाबुची, है ना नहीं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्स रिएक्शन, कहीं ना इन दिस रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously. Okay, occurs simultaneously माने एका बेले कौन होची ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दुईटा को रिएक्शन होची, सेतिबे याको कौन कहउची ना रिडक्स रिएक्शन, है ना नहीं। सेतिबे याको कौन कहउची ना रिडक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एका बेले होची, बुझी पारलो, है ना नहीं। से भली भाबरे आमे आ गोटे भी एग्जांपल नै परिया बर्तने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रो। बर्तने आ गोटे आमे एग्जांपल कोन नबा, देखो मु आ गोटे एग्जांपल नेबी कोना जेतबेले ना H2S सपोज कौन हम ना H2S कौन हम ना H2S उन्हें भी H2S react with chlorine. Okay, H2S react with chlorine, you get sulfur plus HCl, है ना, you get sulfur plus HCl, you get sulfur plus HCl. ओके, दिस इज योर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कौन ना हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज योर क्लोरीन, you get sulfur, this is your sulfur, this is your हाइड्रोजन क्लोराइड बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना नहीं। ये रिएक्शन कौन है ना जो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिएक्ट विथ क्लोरीन, यू गेट सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना नहीं। तार कौन होची ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कौन होची ना देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कोठी होची, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखो H2S, ओके H2S इज कन्वर्टेड टू सल्फर, देखो ये H2S कन्वर्टेड टू सल्फर, है ना नहीं, H2S कन्वर्टेड टू सल्फर। सो इन दिस केस कौन होची ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होची, H2S रु कौन होची हाइड्रोजन रिमूव होके हमको सल्फर मिलुची। सिमिलरली कौन हो ना ए रिएक्शन कौन होची ना एडिशन ऑफ कौन होची ना हाइड्रोजन, देखो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होची, ए केस रे कौन होची ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है कि HCl मिलुची, है ना नहीं। ता माने कौन ना डेफिनेशन अनुसार कौन होची ना हमर आउ आमे मते कहि परिबा कौन ना इन दिस रिएक्शन H2S इज चेंजिंग टू
sulfur, H2S is changing to sulfur, है ना नहीं? That means hydrogen is removed from a hydrogen sulfide, है ना नहीं? So कौन ना this is also called as oxidation. Hydrogen is removed from hydrogen sulfide, है ना नहीं? हाइड्रोजन सल्फाइड रू कौन होची ना हाइड्रोजन रिमूव होची सेथि पई कौन होची ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जेहेतु होची तेणु करी this reaction is called oxidation. Okay, hydrogen sulfide कौन होची ना oxidized to sulfur. That means in this case hydrogen sulfide is being oxidized to sulfur. Oxidized होची देखो तो है ना नहीं? Similarly कौन होची ना क्लोरीन कौन होची ना reduced to hydrogen chloride. Chlorine is being reduced to हाइड्रोजन क्लोराइड. देखो हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड की कन्वर्ट होची है ना नहीं? दैट मीन्स कौन होची ना इथरे कौन होची ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होची. इन दिस केस देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है ना नहीं? इन दिस केस रिमूवल होची कौन ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होची को केस ना H2S केस कौन होची ना व्हेन H2S कन्वर्टेड टू सल्फर दैट मीन्स कौन होची ना इथरे हाइड्रोजन कौन होची ना रिमूव हो, है ना नहीं? ताले कौन है ना एथिरे कौन है ये जो रिएक्शन हम देखले कौन ना को सब्सटेंस टा हमर ऑक्सीडाइज होची ना H2S कौन होची ना ऑक्सीडाइज होची कोट की ना सल्फर को ऑक्सीडाइज होची कोटा ना H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर. सिमिलरली कौन होची रिड्यूस्ड की होची रिएक्शन रे ना क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, है ना नहीं? क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, है ना नहीं? क्लोरीन इज रिड्यूस्ड. ताले ए रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ना Cl2 होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना नहीं? ताले रिड्यूसिंग एजेंट के ना H2S ये होची कोन ना रिड्यूसिंग एजेंट. H2S होची रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, दैट मीन्स ये मध्ये गोटे कोन ना हमर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. व्हेन H2S react with chlorine you will get sulfur and hydrogen chloride or hydrochloric acid. That means कोन हला ना H2S is converted to sulfur, Cl2 is converted to HCl. H2S रू कौन है ना हाइड्रोजन रिमूव है कि सल्फर मिलला, है ना नहीं? क्लोरीन रे एडिशन है कौन ना हाइड्रोजन कौन मिलला ना हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना नहीं? ताले कौन है ना एथिरे कौन है ना H2S is oxidized and Cl2 is reduced. H2S is oxidized and Cl2 is reduced, है ना नहीं? ता माने कौन ना आमर जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कह ना द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड, है ना नहीं? द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड योर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना नहीं? सिमिलरली कौन ना जो सब्सटेंस द सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना नहीं? ताले कौन ना ये जो रिएक्शन कौन है ना H2S होची रिड्यूसिंग एजेंट, Cl2 होची कौन हमर ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऑक्सीडाइज्ड की होची ना H2S होची ऑक्सीडाइज्ड होची, है ना नहीं? ऑक्सीडाइज्ड होची आउ रिड्यूस्ड की होची ना Cl2. Cl2 रिड्यूस्ड है कि हम कौन मिलची ना HCl और H2S कौन होची H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कौन होची ना ऑक्सीडाइज्ड है कि हमको ऑक्सीडाइज्ड है कि सल्फर मिलची. आर यू क्लियर? मु भावची रिएक्शन टी तुम मैंने भल भाव बुझी पाइल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. वर्तमान आज बर्तमान आम एतिक देखले और नेक्स्ट क्लास रे आम देखिबा आर किछि एग्जांपल एवं बुक रो हमर एनसीईआरटी बुक हो गेला कि ओडिशा स्टेट बोर्ड रो जो बुक अछि प्रायतः दुईटा क्वेश्चन होती कौन ना सामान सब सेम क्वेश्चन रही कहीं यहाँ हूँ केवल ट्रांसलेट कराई तेणुक आर क्वेश्चन आंसर किसी करवा. ये चैप्टर पर आ गोटे नुआ चैप्टर आम आरंभ करवा जोटा कि इंपोर्टाट चैप्टर जहाँफल कि जो चैप्टर बर्तमान जो टॉपिक आरंभ करी टॉपिक की क्लास 7 ରୁ 10 पर्यंत समस्त उपयोगी. कौन ना आम जो केमिकल ये सब देख केमिकल जो रिएक्शन सब लिखुचे ये केमिटी आम भल भाव निजे बुझिकी लिखिपर केमिकल रिएक्शन लिखा तमती बालांस करवा फर्मूला सिंबल बहुत किसी जो टॉपिकटा बर्तमान भल टॉपिक गोटे आरंभ करी जहाँफल कि क्लास 7 ରୁ 10 पर्यंत समस्त बहुत आवश्यक आपण मैंने भल भाव बुझीपारे. मोर बर्तमान नेक्स्ट जो
रहिबो तार कोन ना केमिकल रिएक्शन केमती आम बालांस करचे केमती फर्मूला लिखुचे सिंबल लिखुचे मैंने बहुत किसी भास्ट भाव में मुझे एक्सप्लेन करी आज रोचे जय जगन्नाथ।